हमारी आज की जो बुक है वो है कल्चर ऑफ ग्रोथ, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। तो उसमें हमारे साथ आज वकास हैं। तो वकास से हम पूछते हैं कि जैसे हमारा एक रूटीन में होता है कि थोड़ा सा हमें ज़रा बताइए जोएल मॉकियर जो है ये क्या हैं, कौन हैं, कहाँ पे हैं, इसकी कोई पहले किताबें हैं नहीं हैं, और दूसरी बात कि इस किताब को हमने क्यों आज के लिए जो है वो सिलेक्ट किया और रीडर्स के लिए इसमें क्या चीज़ है। Okay, so thank you very much. First of all, very briefly about the author, the Joel Mokyar. He's right now a professor at Northwestern University. So he did his PhD from Yale in 1974 in economic history. So he's basically economic historian, and his PhD thesis and even subsequent work जो है वो focus कर रहा है mostly on industrial revolution, the causes and reason and the consequences of industrial revolution. And he has published more than 100 academic articles and more than a dozen books. And this is his latest one, published in 2016, which are actually based on Schumpeter lecture, which he has given in 2010. तो वो lectures को बाद में compile किया इन्होंने। तो ये this is very briefly about the. So he's a specialist in this area. So he's an very established economist and academician. So that's why book is full of academic references. So it is written by a scholar in a sense. क्योंकि बहुत से journalists भी लिखते हैं which are equally good, जो synthesize करते हैं existing literature को, but this is he himself is a leading scholar. Now coming toward book. Now this book is in a sense if you just set the stage कि ये book है क्या, what it try to answer. In economics, I think one of the important and elusive question is जो right from Adam Smith to Daron Acemoglu, why some nations are rich and others are poor. So this is the core question which people try to answer. What is the reason? Adam Smith से शुरू हुआ, but the problem is unlike physics and chemistry where things could be settled after experimentation and all those. Here, because there are so many variables which can explain why some nations are rich and others are poor, this is in that tradition. And secondly, one of the very rich literature is, and literally you can find literally hundreds of books and PhDs on this question, that why industrial revolution happened in England. So this is very, like it could have happened like in Ottoman Turkey or China or even India could be one place. But now it happened in somewhere in Northern Europe, which nobody could have imagined if you go back like 200-300 years ago. Like आप इसको यूँ देखें कि at the time of Akbar, when Britisher want to trade, तो Akbar thought कि these people are like savages and they are not cultured and civilized, तो इनके पास हमें कुछ देने को है ही नहीं. So this was the condition at that time, but later on. So, but इस पे तो बहुत debate हुई है, and there are books on that कि why, where it happened and why it happened in England. And there are many theories, उसमें resources की है, मतलब labor cost है, geography है, even some people call it like religious element है, बहुत से factors हैं. Now in this particular book, which is that he tried to answer that industrial revolution तो हो गया इंग्लैंड में हुआ, उस पे तो बहुत काम हुआ है. He goes back before those for 2 centuries, जिसको वो कहता है from Columbus discovery of America to the publication of Principia Mathematica by Newton. So these 2 centuries, which are before industrial revolution, so he tried to explain that, और उसका जो basic argument है कि that is, हम आते हैं बेसिक आर्गुमेंट पे आते हैं. जी जी. अब उसने बुक का टाइटल स्टार्ट करता है कल्चर से. हाँ. और कल्चर को एक खास तरीके से वो डिफाइन करने की कोशिश करता है. जी. तो ये कल्चर की वो क्या डेफिनेशन करता है, और एक वो बात करता है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन है और एक कल्चरल हिस्ट्री एक्सप्लेनेशन है. तो इस पे आप कुछ बताएंगे कि कल्चर को वो कैसे डिफाइन करता है और कल्चर वर्सेस इकोनॉमिक हिस्ट्री इसको कैसे लेके चलता है, और इसका क्यों उसका बाकी लोगों से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ जाता है जब वो कल्चर की बात करते हैं. बिल्कुल. नॉर्मली इकोनॉमिस्ट जो हैं वो आपको तक क्वांटिफाइबल, वेरीफाइबल एंड समथिंग विच यू कैन मॉडल, उन चीज़ों पे ज़्यादा उनका फोकस रहा है. जैसे आप ट्रेड करेंगे, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, दिस इज जिसको वो कहते हैं स्मिथसोनियन एक्सप्लेनेशन के वाई सम कंट्रीज आर रिच. कल्चर जो है ना बड़ा फजी टर्म है, मतलब इसको हर आदमी अपने तरीके से एक्सप्लेन करता है.
खास तौर पे जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, कल्चरल स्टडीज़ वाले, दे लुक इट. सो इन दिस ऑथर मेक दिस क्लेम कि मैं एक तो उस तरफ नहीं जा रहा, आई एम नॉट अबाउट कल्चर स्टडीज़ की बात नहीं हो रही. एंड ही डिफाइन कल्चर एंड ही picked up a definition by a sociologist which I think is very precise and relevant to his work. तो जो ये define करता है culture को, culture is sum of beliefs, values and preferences which are transmitted socially, not genetically, and which can affect a subsection of society. So that's a very precise definition. तो इसको हम unpack कर लेते हैं. The first is belief. So it includes belief. Belief could be about a material thing like this is a table or this is a room, or it could be a metaphysical thing. So which you have belief and you believe that it's true. That is belief. Values are more like subjective thing, but what you like to be in the world. So that could be different. So values. And third is preferences, which economists use a lot. Okay, my preference is for income distribution. Somebody would prefer for economic growth and so on. So if you add these, but interestingly, these things are not genetically transmitted. Like these are things which is human construct. ये social construct हैं. तो society से हम जो सीखते हैं और वो करते हैं. And not only they affect, they significantly affect a subsection of the society. So he defined culture in this particular sense. कि जो इस definition पूरा उतरेगा, according in this book he considered that as a culture. अच्छा, ये जो कल्चर की बेस पे वो कहते हैं जी कि वो अमीर हो गए, उन्होंने मटेरियल वेलबींग उनकी बढ़ गई, तो कैसे होता है कि ये कल्चर जिसमें बिलीफ, वैल्यूज और प्रेफरेंसेस वो कहता है जब आती हैं तो इनकी बेस पे एक सोसाइटी जो है वो मटेरियल वेलबींग की तरफ ज्यादा चली जाती है एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटी. तो ये क्या वो बात कर रहा है, इसको कोई थोड़ा सा एक, जैसे मैंने पहले कहा ना, एक ये ट्रिकी सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिस्ट ने इसको नॉर्मली इग्नोर किया, तो दे कंसिडर इसको सोशियोलॉजिस्ट को दे दिया कि दे लुक एट द कल्चर एंड. लेकिन वट एवर यू एक्सप्लेन, वेन एवर यू ट्राई टू एक्सप्लेन, तो जितनी भी एक्सप्लेनेशन चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की है उसमें एक रेजिडुअल टर्म रह जाएगी कि जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था. लाइक लेबर से भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा, इवन इंस्टीट्यूशन पे हम आएंगे उससे भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा. तो कल्चर हैज समथिंग लाइक इम्पोर्टेंट. नो हाउ हिज क्लेम इज, और ये क्लेम मतलब ये ओरिजिनल क्लेम नहीं है, बहुत से लोगों ने इस पे किया. इस पे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसने बार बार उसको रेफर भी किया है, वो है जॉर्ज मैक्लॉस्की की जो 3 वॉल्यूम वर्क ऑन बुर्जुआ वर्क एथिक्स, बुर्जुआ वर्च्यूज. उस पे जो क्रक्स है वो ये है कि, और ये यू कैन फील इट इन अवर कल्चर एज वेल, कि बिफोर 15th century, you know, so there was a kind of culture which is, you can think of, कि जिसमें making money and doing something like physical work was like considered कि ये lowly काम है. This is not something like aristocrats का ये काम नहीं है. जो elites are meant to be landed aristocrats, तो कोई आदमी tinkering कर रहा है, for example, he come up with a new way of table, making a table, तो ये it's not considered something like prestigious. So McCloskey का argument ये है कि जब society ने making money, again in a legal sense, not through illegal means, through working hard and through innovation and tinkering, when society accept it कि this is something to be aspire and this is something that we can look, तो क्या वो cultural change हुआ? मतलब लोगों ने idealize किन लोगों को करना शुरू कर दिया कि those who are doing, and before that आपको देखें warriors or statements. इससे पहले कि मैं इस पे आऊं कि यूरोपियंस जो है वो उनका एलीट कल्चर से इंटेलेक्चुअल कल्चर कैसे आया, इस पे हम इससे पहले ये आपने एक बात कर दी मैक्लॉस्की की, तो इस वक्त अगर आप ये बताएं कि मैक्लॉस्की और उसके साथ कुछ लोग एक साइड पे हैं जो कल्चरल और इसकी वर्सेस एस मगलो एंड डोगलस नॉर्थ जो है वो इंस्टीट्यूशंस, वो कहते हैं कि जी हमारे पास मार्केट एफिशिएंसी होनी चाहिए, गुड इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, गवर्नेंस होनी चाहिए. तो ये जो डिबेट है इसको आप कैसे लेते हैं, उसने कैसे लिया है कि इंस्टीट्यूशंस वर्सेस ये जो मैक्लॉस्की वाले लोग हैं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट उसने वहां पे ओरिजिनेट की है, तो इसको वो कैसे लेके चल रहा है? जो आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं, दिस इज आई थिंक वेरी प्रोमिनेंट. अब तो बहुत ज्यादा ये मेन स्ट्रीम आर्गुमेंट बन गया. इट स्टार्टेड विद डगलस नॉर्थ एंड इट इज पॉपुलराइज्ड एंड यू नो by Darren Acemoglu with Why Nation Fails. और उसमें और इसमें there is a kind of overlap because some people, again institutions have this another problem कि everybody thinks of institution in their own way. So people have, they can think of anything and they can consider it as an institution. Here he makes this kind of distinction that culture is, it originates, it manifests through the individual mind, change in the mind of individual. So, you know, that is culture. And
institutions are socially constructed, you can say, rule of the game, which incentivize certain behavior and disincentivize. So इसके ख्याल में कि जो institutions हैं, और जो एसोमग्लू ने भी कहा कि sometime those institutions as what they call extractive institution भी बन जाते हैं, which are not good for the society, लेकिन as a whole because people who are in the power, there is an incentive for them to keep those things in place. So इसका जो, हाँ ठीक है, इसका जो बेसिक, अगेन जैसे मैंने कहा ना, इसमें ओवरलैप है, क्योंकि बाज लोग जो इंस्टीट्यूशनल वाले हैं वो भी कहते हैं कि हम नॉर्म्स को भी तो कंसिडर करते हैं और कल्चर को भी करते हैं, लाइक देयर इज ए काइंड ऑफ ओवरलैप, बट आपको पता है एकेडमिक लाइफ में दे ट्राई टू निटपिक और कोई अपना, तो इसने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे कहा कि दिस इज मोर लाइक इंटरनल चेंज इन द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल, हाउ पीपल थिंक ऑफ whether making money is something like it's good or bad. जो आप बात कर रहे हैं कि जी वो एक थिंकिंग प्रोसेस, और वो, तो ये एक बात कहीं पे वो करता है कि जी आपके पास जो है वो यूरोप की जो एलीट है, जी जी, वो इंटेलेक्चुअल्स हो गए या कोई इस तरह की बात है. ये क्या बात है? इस बात को आप कैसे हमें वो क्या कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो यूरोपियन एलीट कल्चर था उसमें एक इंटेलेक्चुअल शिफ्ट आई, जिसके बाद से यूरोप जो है वो एक मटेरियल वेलबींग में या इन चीजों में जो है वो आगे चला गया. फिर आखिर में जाके हम देखते हैं चाइना वर्सेस यूरोप वाली बात भी. तो ये क्या बात कर रहे हैं? एक्चुअली यूरोप में वन ऑफ द, मतलब रीजन इवन चाइना के साथ भी, कि यूरोप के अंदर एक देयर इज अ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑलवेज, एंड इट वाज द केस, एंड इट हैज इट्स ओन कॉस्ट, बिकॉज व्हेन यू हैव पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देयर आर मेनी like countries, so they spend a lot on defense, और वो उसकी cost है. But what is the benefit of political fragmentation? So there is an intellectual kind of independence. For example, if you're for example, if you're in England and the king is not happy with you because of your certain इस तरह के हेरेटिक किस्म के आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, सो यू कैन गो टू फ्रांस और यू कैन गो टू हॉलैंड और यू कैन गो टू स्पेन. तो एक वन ऑफ द रीजन इज अकॉर्डिंग के यूरोप में एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन थी, बट देयर इज ए इंटेलेक्चुअल यूनिटी, एंड वन ऑफ द रीजन ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल यूनिटी इज लैटिन लैंग्वेज. एक्चुअली ठीक है, वो इलीट्स की लैंग्वेज थी, बट दे कम्युनिकेट थ्रू दैट लैंग्वेज. एंड देयर आर पीपल जिसको उसने, देयर इज अ होल चैप्टर ऑन दैट, व्हाट ही कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ लेटर्स. And again, this Learner Republic, which is organizing this program, is actually inspired by that. This is called Learner Republic. So, वहाँ पे वो Republic of Letters, the idea, it is not a formal institution or anything like that. These are independent people like Voltaire, Spinoza, and Descartes, and these are independent philosophers which many of them never met in their life, but they used to correspond with each other through letters. So the idea was that these ideas come into that and they exchange an idea. And important thing is, इसमें एक sentence था कि irreverence is the key to progress. The point is, reverence to past or reverence to what others have said, उसको उन्होंने dismantle किया philosophers ने, कि और slowly and gradually किया कि उन्होंने. इसमें एक और उसने बात जो की है कि वो जो आपने कहा कि यूरोप जो है फ्रेगमेंटेड था, सारा कुछ था, इसके बावजूद भी, और वहाँ लोगों की ईगोस भी बहुत ज्यादा थी, झगड़े भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन इसके बावजूद भी जब ये रिपब्लिक ऑफ लेटर्स, वो जो वहाँ पे जो आइडियाज का जो कल्चर था, ये जो रिस्पेक्ट है, वहाँ पे उनकी कोई जो है हायरार्की नहीं थी. वहाँ पे जो आइडियाज होते थे, आइडियाज को बहुत ज्यादा वहाँ रिस्पेक्ट दी जाती थी. तो ये देखा जाता था कि आइडिया किसका सुपीरियर है. तो वो ये जो एक चीज आई है, इस पे कोई थोड़ा सा आप एग्जैक्टली कि मतलब आप कौन बंदा है क्या, बिकॉज यू हैव टू गिव इट्स लाइक ए काइंड ऑफ एकेडमिक रिव्यू भी था. मतलब आपकी एस्टैब्लिशमेंट तभी होगी कि व्हेन योर आइडियाज और लाइक अदर पीपल यू नो, और उसकी वैलिडिटी उसी पे कायम होगी. इस पे नहीं होगी कि आप कौन हैं, आपकी फैमिली. इन सम पीपल आर लाइक, अगेन उसमें भी एरिस्टोक्रेसी में से थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका बैकग्राउंड उस तरह इलिटिस्ट नहीं था, बट बिकॉज ऑफ देयर आइडियाज उनकी एक रिस्पेक्ट वो हुई. तो ये जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एंड सेकेंडली बिकॉज जो प्रोसिक्यूशन वगैरह भी हुई, रिलीजियस वॉर्स भी हुई यूरोप में, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दे रियलाइज के इवन के डिसएग्रीमेंट को, और इवन इफ यू लुक एट देयर कनेक्शन विद चाइना एंड इवन विद द मुस्लिम वर्ल्ड, तो यूरोप वॉज वेरी रिसेप्टिव टू आइडियाज. लाइक फॉर एग्जाम्पल लुक एट, जो हमें पता ही है, फ्रॉम अलजेब्रा टू पेपर मेकिंग टू कॉफी, उन्होंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया, इवन उन्होंने उसको वो भी किया, recognize भी किया. So they were more open. On the other hand, for example, in China, at the end of the chapter, this debate कि why not China? So one of the explanation कि China
don't have political fragmentation, but it has a coercive authoritarian bent. तो अगर आप करेंगे top down, अगर if your opinion are exactly against the state, तो मुश्किल है आपके लिए survival. You cannot move around here and there. Like in Europe, it was relatively easy for people to annoy the elites or to annoy the powerful people, because they have this. Even there is a competition between states. So they try to attract artists and philosophers and these kind of people कि यार हम उनको attract कर लें if they are facing prosecution there. So it's a long story. Again, these things never happen, and even these people, they have not realized that they're part of this Republic of Letter in their life. They were there, they're exchanging notes, but they never realized that they are doing. This is sometimes what they call, economists call, these are unintended consequences. So they have never planned कि ऐसा होगा, but because of these cultural factors, economic growth happened in 1500 से 1700 इसकी क्या इंटरेस्ट है, ये क्यों इस पीरियड को वो क्यों स्पेशल इंटरेस्ट लेके चल रहा है और पूरा उस पे जो है वो डिबेट करते हैं. नॉर्मली जैसे हमने पहले भी कहा कि इकोनॉमिस्ट और मोस्टली इंटरेस्टेड इन 1700 onwards. So they look at, like, if you look, तो वो कहेंगे कि cheap availability of coal था. 4-5 हम देते हैं ना उसमें कि जी हमारे पास स्टीम इंजन आ गया, स्टील इंडस्ट्री आ गई, रेलवे आ गया, बल्ब आ गया, चिप इंडस्ट्री आ गई, माइक्रो ये जो है वो, तो इसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये पिछले 250 साल में आपकी बहुत बड़ी जो है प्रॉस्पेरिटी आई. और वो जो ग्रोथ है, व्हाट ही कॉल स्मिथसोनियन ग्रोथ, वो है एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ट्रेड बेहतर होगा, लाइक because the bigger the market is, the more incentive is for division for labor. So मतलब वो तो Smithsonian argument है. ये he tried to unpack this कि why it happened here, why not like in other places. So he goes back to look at the intellectual changes in the society. Again, not society at large. ये भी एक minority लोग थे, but because his argument is because of post and printing press, the ideas of the small minority of elites get into the mainstay. So, and sometimes you don't need a majority of people to influence. For example, he gave the example of Keynes. Keynes become influential not because public understand it. It's because policymakers and economists pick up his ideas. On the other hand, he gave the example of Hitler. If you want to change, then you need to take a lot of people with you in order to change. So there are different. For some people, agar authoritative figure endorse them, the people just simply follow their leads. So they don't have to get into it. So that's why the reason for going back 200 years, looking at the culture, any focus on culture, how the thinking of general public at large has changed, and it create a kind of conducive environment for this kind of tinkering and innovation. And these people, like those who are artists and like craftsmen, normally historically they don't have prestige. So people with the science have prestige, but तो इनको आपस में भी जोड़ा यूरोप में, like people who are scientists and they are connected with people who are doing work, real work. तो and they try to. अच्छा, एक और important इसमें explanation है इसकी कि वो ये है कि the culture of getting into useful knowledge. The idea is कि any knowledge which is like it is more pragmatic, like कि वो चीज जो बस practically हमें फायदा पहुंचाए. And people tried, before that it was some kind of insult for intellectual to talk about practicality of their ideas. They would think about abstract terms like most philosophers. So here there is a bent in this intellectual current कि यार जो भी आप idea कह रहे हैं, if it has a practical, and then there is a convergence कि जो businessmen थे, जो traders थे, even they have a kind of incentive कि they also started funding. और इसको हम यूं ले सकते हैं कि उन्होंने यूजफुल नॉलेज की डेफिनेशन ये कर दी कि जिससे आपकी मटेरियल वेलबींग जो है वो ज्यादा हो जाए. तो वैसे ये हमारे जो है ना हमारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट है इल्मे नाफे और इल्मे गैर नाफे. ठीक है, और हमें इल्मे गैर नाफे से बचना चाहिए. ये हमारे यहाँ भी, उनके यहाँ जो है वो उन्होंने अपने नाफे इल्म को इस तरह से डिफाइन कर लिया. वो कहता है कि जी दैट मीन्स कि उन्होंने कहा जी कि इससे हमारी मटेरियल वेलबींग बढ़े. और उन्होंने ये जो कल्चर है, उनके कल्चर में एक चेंज आई. वो कहता है जब ये चेंज आ जाती है तो कौमें जो है वो उस चीज को परसू करना शुरू कर देती हैं, उसको हासिल करना शुरू कर देती हैं. तो ये जब उनमें एक जो कल्चर की चेंज आई, जिसमें ये वो जो आप कह रहे थे वैल्यूज हैं, बिलीफ्स हैं, तो उनके बिलीफ में आ गया कि हमें मटेरियल वेलबींग को ज्यादा से ज्यादा करना है. तो इसको उन्होंने नाम दे दिया यूजफुल नॉलेज. और एक और जो कल्चर में चेंज है वो दिस आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, that progress is not only possible, it is required, like we should do it. उससे पहले क्या था कि people thought, like European thought कि whatever has been achieved by Romans and Greeks.
So they are the height of their ideas and philosophy. And then in the Middle Age, in 1500 onwards, they realize, progress is, whatever they have said, वो उसको challenge. इसलिए Newton is very important, because Newton actually challenged the whole idea of physical world. That these things are, although he has a religious inclination as well, but he said that there is a kind of regularities in nature which we can harness for our good. Like if we understand how the star and planet and moons are moving, so you can use that. Before that, और जब ये हुआ तो it is like a, in a sense, intellectual shock for the existing knowledge. It's like kind of a black swan event for the existing knowledge. Okay, people realize, अच्छा, so we have been thinking something for hundreds of years and it turns out to be flawed. So it's not whatever Aristotle or Plato or someone has said is not the final word. So it is a kind of looking forward, and then people have invented things and people have seen कि यार steam engine से ये फायदा हुआ. But without any philosophy, people realize that cost have reduced, efficiency has improved. So then it is a kind of this idea. Even recently, there is an economist called Taylor Cohen, Marginal Revolution, जो blog में लिखते हैं. So he wrote an article for Atlantic in which he proposed that we need an academic discipline, like kind of, which is called progress studies. We need to focus on why progress happened, what are the bottlenecks, and how although we study these things in a separate disciplines, but the idea that progress possible bhi hai, and we can achieve that. This is something new. This is a mental framework change हो गया ना. उससे पहले क्या है कि whatever happened in the past, that is the standard. यानी कि मेन लेसन ये है कि ये बेसिकली जो हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है ये हमें ड्राइव करता है. हम कितने मोटिवेटेड होते हैं उससे आप जो है वो तो हमने अपनी डेस्टिनेशन क्या सेट करनी है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड. कोई बाइसेस की बात करता है कहीं चैप्टर 5 में जाके, तो आप उस सिलसिले में कुछ बताना चाहें क्या? बाइसेस बहुत मारूफ हो गई हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में. तो दिस इज वो तो आप लोगों से नजर से गुजरा हो. बाइसेस ये हैं कि बेसिकली व्हाट आर बाइसेस? दीज आर मेंटल shortcut. So instead of going into complex computation, we follow a mental shortcut which makes sense. And when it create problem, we call it biases. अब यहाँ पे biases, although I was listening one of his lecture, तो he said कि the person who come up with the biases, उसने कहा कि मुझसे भी गलती हो गई है कि लफ्ज मैंने डाल दिया, but now it is too late, I cannot change it. So ये भी होता है कि आप जो नाम दे दें तो later on even you cannot change it. तो यहाँ biases ये है कि there is many things what he call cultural menu. Like if you go to a restaurant, so you have a menu of list of things to eat. So in a culture there are a long list of like possible values. Now why people pick certain kind of values? So here biases mean there is a mental shortcut people use to pick up certain values from that menus of like values. So एक तो उसमें वो उसे कहते हैं content bias. The point is कि even the validity of the content is such कि जैसे आप Copernicus ने जब हमें बताया कि we are not the center of the universe, it's like the sun and we are moving around, and then when people realize and then they have to accept it later on, people Galileo ने जो कहा, so these are something which later on people have to accept based on their internal validity कि these things are true from experiment and other kind of evidence. And then there are sometimes people use this, what he called, I don't know exactly, but he used this thing called authority figure kind of bias. Like people cannot comprehend and process all the information about any particular topic. So they go to expert. Expert are actually outsourcing of your processing power. So instead of using your own mental processing power, you go and look at the expert. So if an expert endorse it, okay, the particular point of view, so then people go and just simply follow that. So culture can change. And then sometimes there is a conformity bias. People go for those things which are like close to whatever they're existing. असल में उसमें ये होता है कि आपको वो इंफॉर्मेशन लेना आसान होता है जो आपको इजीली पहले से आप बिलीव कर रहे होते हैं. जो कोई न्यू चीज होती है वो आपका ब्रेन जो है वो उसको लेने के लिए जो है ना अपोनेंट व्यू को लेने के लिए तैयार नहीं होता, तो आप उसको जो है वो थ्रो आउट कर देते हैं और आप उस इंफॉर्मेशन जो आपके आइडियाज को सपोर्ट करती है इसको कंफर्मेशन बायस. हाँ, अच्छा ये वकास इसमें बताइए, ये हम आखिर में चलते हैं. ये चाइना वो कहता है कि वो जो है एक यानी कि एक यूनिटरी टाइप या एक जो भी वो वर्ड मुझे नहीं आ रहा, जबकि यूरोप हम कह रहे थे फ्रेगमेंटेड था. चाइना एक बिल्कुल एक जो है वो सिंगल फोर्स के अंडर जो है मूव कर रहा था. तो चाइना में ये प्रोसेस क्यों नहीं हुआ, यूरोप में ये क्यों हो गया, हालांकि शायद ठीक है. तो ये यहाँ पे आके वो कुछ आखिर पे जाके चलता है.
चाइना इज वेरी इंटरेस्टिंग केस ना. अब हमारा अपनी चाइना की relatively अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है. इवन यूरोपियन हिस्ट्री हम ज्यादा पढ़ते हैं. बट इफ यू go back to many things in life, like if you go back to writing, paper making, meritocracy, kind of bureaucracy, so many of these things goes back to China. So this is a big question. If China is like the, in a sense, starter of these many interesting things, so from coffee to tea to many things to silk, so why not China? So one explanation is this unitary government. So it's a kind of, China has been like more or less, whatever is the current China, so it is dominated by a single kind of government. So in that case, there is an advantage that your defense cost would be low. It's very difficult to you know. But on the other hand, the problem is that wahan pe these new ideas and anything which challenge the existing status quo is easy to crush, or it's easy to rebel, and people would think yaar jo hai, it's so there is a high cost that individual have to pay for saying something out of the box. So this is one thing that in Europe, because of that, it's not there is inherent superiority of Europe, and it's not the case, but the nature, or maybe one of the reason is geography. In Europe, the nature of geography is that it is difficult to run the Europe as a single entity. So by default, there are different entities. So there is a competition for ideas and attractiveness for these things. So, you know, this is like one of the explanation that why China could not able to get, although they have the required, even if you look at the literacy rate, so literacy rate in China were much higher than Europe, even 1500 and 1600. मेरा ख्याल है अब हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं. वकास, इस पे कुछ लोगों का ख्याल ये है कि उसने 300 पेजेस से रेपिटेशन ही करता रहा है. ठीक है, ये 100 पेज की बुक होनी चाहिए थी. तो अगर आप ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कौन से जो है वो पेजेस उनके लिए, या किस पार्ट को वो इजीली फोरगो करके सीधे डायरेक्टली पार्ट 2 पे जा सकते हैं, पार्ट 3 पे जा सकते हैं. तो लोगों का एक उस पे क्रिटिसिज्म यही है कि उसने बड़ी लंबी एक बात लेके चलता रहा है, रेपिटेशन करता रहा है. उसी बात को 100 पेजेस में वो प्रिसाइजली कर सकता था. तो इस पे आपका क्या? नहीं, वो तो एक जर्नल लेसन है कि मोस्ट ऑफ द बुक शुड बी एन आर्टिकल एक्चुअली, एंड मोस्ट ऑफ द आर्टिकल शुड बी ए ब्लॉग पोस्ट. तो ये तो एक है, लेकिन वो आपको पता है इसकी इकोनॉमिक्स अपनी है. Like there is a publishing industry, so there you have to write and publish it. तो और दूसरा मैंने पहले कहा, he's a hardcore academician, so it's not an easy read. जैसे मतलब होता है ना, क्योंकि ट्रेनिंग का भी एक वो इशू है, तो इतनी ज्यादा रेफरेंसिंग है ना उसके अंदर कि इट्स लाइक लिटरेचर रिव्यू जो आप. और यहाँ पे एक और बात भी याद आ रही है कि उसने ना किसी भी बात, क्योंकि वो एकेडमिशियन है, तो ये लोग जो है बड़े एक ना वो ट्रेंड होते हैं, तो उसने किसी बात का ना बड़ा सीधा सीधा जवाब नहीं दिया. उसने बड़ा एक ना बड़े बैलेंस वे से वो चलता रहा. किसी बात को वो कैटेगोरिकली यस या नो में नहीं करता कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा. तो ये एक उसमें जो है ना वो उसने अपनी एकेडमिक्स को उसने मेंटेन रखा है, रादर देन कि वो एक जो है प्रेस्क्रिप्शंस लोगों को, जैसे यूजुअली हमारी अदर बुक्स में प्रेस्क्रिप्शंस होती हैं, तो वो उसने जो है वो दूसरे लोग हैं वो तो इस तरह लिखते हैं. और वकास ऐसी बात जो आपको इसमें बड़ी जो है ना वो बहुत सारी बातें हैं, उसने साइंस को, वो लीनियर थिंकिंग को, ये सारी चीजें उसने डिस्कस की. हम नेचुरली यहाँ पे सारी नहीं, तो कोई ऐसी बात रह गई हो, वरना हम ऑडियंस की तरफ चले जाते हैं. बिल्कुल, मेरे यहाँ से जो वन ऑफ द कोर थिंग इज दिस पावर ऑफ आइडियाज, एंड आई थिंक वी आर सिटिंग हियर. एंड एक और चीज है बुक में कि यूरोप में there are many factors. One of the factors is there are what they call associations लोगों ने बनाई, like non-commercial, just for the purpose of learning. Like this book club is actually based on those kind of ideas, ना कि लोग नेटवर्किंग जो है, नेटवर्किंग क्लब्स और वो जो है, ठीक है ना. तो अब ये लंदन में आप देखें, if you go back to history of stock exchange or Royal Society of Science, most of them were like coffee houses originally. People used to come and have gupshup over the coffee, and then eventually it would आज lead मैं to. नवीद की जगह बैठा हूँ, तो नवीद जैसी थोड़ी थोड़ी बातें कोशिश करते हैं हम. तो बेसिकली ग्लेजर की बुक है सिटीज पे, ठीक है. तो उसमें वो कहता है यू बिकम स्मार्ट बाय हैविंग अदर स्मार्ट पीपल अराउंड यू. तो ये जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं, जब हम ऐसे लोगों में रोजाना बैठेंगे, तो क्या होता है कि वहां पे सिलिकॉन वैली में क्यों लोग इंजीनियर्स बनते हैं. वो मोरेटी की बुक पढ़े ना, ज्योग्राफी ऑफ जॉब्स, तो वो यही होता है. जब आप लंच पे जाते हैं, टी पे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, लोग कहते हैं यार हमने इस चीज को ऐसे किया, वो जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन वो अपने. तो बेसिकली टी क्लब्स जो है, आपके जो कैफे हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं. एक होती है
एक्सप्लिसिट लर्निंग जो हम क्लासेस में देते हैं, एक होती है टैसिट लर्निंग जो हम सारे एक दूसरे से ना वैसे ही सीख रहे होते हैं, आते जाते उठते बैठते। तो इसलिए ये जो बात वो कर रहा है ये इम्पोर्टेंट है कि जी हम जो है वो आइडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स जो है वो यूरोप में वो कहता है कि थे, और बाकी जगहों पे शायद हमने उस तरह से पेनिट्रेशन ऑफ आइडियाज, ये कोई छोटी सी फिर लंबी थोड़ी बात हो रही है। ये हमारे यहाँ क्या इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों का कोई कल्चरल जो जो उसकी फॉर्म उसकी डेफिनेशन में कल्चर है, ये इशू है जिसकी वजह से हम मटेरियल वेलबींग की तरफ बहुत ज्यादा जो है वो नहीं अप्रोच करते। या एक तो ये है, मतलब अगेन कल्चर इज सच अ huge word that you can put many things, family structure to political institution and other, and even the role of religion. So even उसने religion के ऊपर, Christianity के ऊपर ज़्यादा बात की, not on Islam. So there is a thing called Puritarian. There is subsect in Christianity. So according to him, उनका argument क्या था कि if we harness the power of nature, this is the glory of God actually. मतलब अगर हम काम कर रहे हैं, साइंस में काम कर रहे हैं, like Newton, so it is like a religious job. तो इट्स नथिंग। तो हमारे यहाँ वाकई एक कुछ कल्चरल और रिलीजियस इंटरप्रिटेशन की वजह से भी देर आर आई थिंक हिंड्रेंस कि पीपल थिंक कि इसको जो वर्ल्डली एंड रिलीजियस को जो डिवाइड किया हुआ है हमने, तो वरना अदरवाइज दिस कुड बी ए रीजन कि अगर इसको, और अगेन दिस कुड चेंज थ्रू दिस काइंड ऑफ डायलॉग्स एंड अदर थिंग कि व्हेन पीपल थिंक दिस काइंड ऑफ प्रोग्रेस आर नॉट समथिंग व्हिच इज एंटी religion or anti-local culture. It is something like which could be part of any culture. So yes, there are reasons. थैंक यू वेरी मच जी। आज की जो है बुक हमारी कल्चर ऑफ ग्रोथ, जिस पे वकास साहब ने बड़ी जो है वो सीर हासिल गुफ्तगू जो है आपके साथ जो है वो शेयर की है। तो आप इस बुक क्लब का जो है बुक कवर के मेंबर बनिए। इस्लामाबाद रावलपिंडी वाले दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आएँ यहाँ पे हमारे साथ बैठें, और इस एटम कैंप की तरफ से ये एक जो है वो उनकी जो सर्विस है इसका बेनिफिट लें। इसका फ़ायदा बहुत होता है, बहुत छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी माइक्रो गेन्स जब आप करते जाएंगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एक बहुत बड़ी मैक्रो गेन मिलेगी। तो ये जो हमारी जो हम पॉलिश होना है, ये प्रोसेस एकदम से नहीं होगा। हम एक किताब पढ़ लें या 2 किताबें पढ़ लें, तो इस तरह से किताब से अपना राब्ता रखिए, किताब पढ़ने वाले लोगों से अपना राब्ता रखिए, किताब पे बात करने वाले लोगों को सुनिए, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं अपनी यूथ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोशिश करें कि अगर यहाँ पे आ सकते हैं, वरना इनको जो है वो ये उसके बाद जो है इसको पोस्ट कर देते हैं अपनी साइट पे, तो एटम कैंप की साइट से आप कर सकते हैं। और ये बड़ा रेगुलर फिनोमिना है। इवन अगर किसी की फ़्लाइट भी मिस हो गई है तो दे ट्राई के उसकी जगह पे कोई और बंदा जाके उस प्रोसेस को मुकम्मल करे। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।